देख सकते हो टेक्नेक्स 2023 आईआईटी बीएचयू टेक्निकल फेस्ट। आप आकर खरीद सकते हो। ये फ्रेम है इंडियन एयरफोर्स। Respected coaches. For our institute and society. Enthusiasts of the technological progress, it is an honor for me to stand before you today as we celebrate the 84th edition of Technex, one of the most awaited technological events in the country. Technex has been at the forefront of technological advancement since its inception. It has served as a platform for aspiring engineers and scientists to show. Round of applause. Kumar Jain, respected Director of the Institute, Dean R&D, Dean of Students, Associate Dean, all the faculty members and their students. Good evening, and let me first of all congratulate you on this 84th edition of Technex 23. And I must also compliment the management of the Institute for continuously for 84 years supporting this kind of endeavor of the students. It's a marvelous thing, and it must continue for all the time to come. I am sure this will happen, and we will all be very proud of seeing the 100th and beyond the edition. I had an opportunity to interact with the students an hour back or so, and I have discussed in great details of how the excitement of technology is happening in the country. We are no more in a system which requires you to get somebody's permission to do something. We are in an age where the sky is the limit. Sky is also not the limit. Actually, you can go to the space and do whatever you want to do, or you can go deep into the ocean and touch the depth of the sky or the ocean. In fact, we have the programs in the country which will see people going into the depth of oceans and also people going into the space. So all that is possible for us to do. The challenge is, and same thing I mentioned earlier as well, the challenge is, can we dream what we want to do? And that dream has to come from within. Nobody can tell you that you must do this or you must not do that. That is not the age. That age was there some time back, but not today. The important thing is that we must dream where we want to be. We ourselves, our society, and the country as a whole. If we can dream that, then we can achieve it. And in the words of Dr. Abdul Kalam, our Honorable President, former President, the dream is that which does not allow you to sleep. So if you can have such a dream and work out how to implement it, that should be the motto in your life. In everybody's life, in fact, not only students, even for us at whatever age we are, and even in the future, that whatever we do. The country today
why policy is willing to support such endeavors. It is not that you have to go and find, of course, your ideas have to be good, they must transform. And we must try to bring the revolution which is disruptive in nature. That means the technology will change the world the way the business is being done today. The time is that government is looking for us to be the leader in technology rather than trying to follow. So far we have been following, somebody made something, somebody made the internet, and therefore we also must have our own solution. Somebody made, let us say, an infrared detector, so we must also have ours. So that time probably has gone. We must make our own technology, and with that technology we must bring in the revolution that we are looking for. One more thing that is happening in the country today is, and we are all very proud of that, is the policy level changes are happening and being driven by the top. When I say top, it is the political leadership which is driving. The goals being set by the government for the exports, especially in defense technologies, they can be met only by indigenous technologies. And today, since I come from the defense background, therefore I am again and again giving the references of defense. Government has announced that hundreds of items will not be imported. They will be all produced in the country by indigenous technology, or the technologies developed based on the already available base from wherever we have got it, and those systems will not be produced. I will give you an example what can happen with such a technology coming in. Today in the country we have an artillery gun which is best in the world in that class. The highest range that a country can get is from the designs made by our countrymen, produced by our countrymen, our two private industries, designs and production, design done by DRDO and production happening at Tata and Bharatpur. If we can with that energy for you to succeed. Since I have spoken quite long in the earlier session, I want to just keep it very short. Let me congratulate you once again and compliment the management for giving you all the opportunities. As an IIT in this region, it is your duty, and you are doing that well, to bring up all the academic institutions of this region to the level that you are at. And DGTM, DRDO, that is technical festival, I would say. And I think this shows the value and the quality and the efforts put in by the students throughout these 84 years, that this function, this festival still has some relevance, among the student community. I was told by the faculty coordinator that more than 300 colleges and institutes are represented in this fest, and there are more than 1,000 participants from different places, different colleges. I welcome. गुड मॉर्निंग। क्या नाम हुआ आपका? आरुष शर्मा। आरुष बताओ, इस टेक्निक्स में क्या क्या हो रहा है इस बार के? टेक्निक्स से शुरू करूँगा। वैसे टेक्निक्स हमारा आईआईटी BHU का टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है। मतलब कमाल की बात ये इस बार का 84th एडिशन है। मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निकल फेस्ट ऑफ आईआईटी, और एशिया का भी बोल दें इसको, इंडिया का बोल दें, सबसे बहुत पुराना फेस्ट है। दूसरी चीज़ ये कि ये टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है। टेक्नो मैनेजमेंट में टेक्निकल इवेंट्स भी होते हैं, मैनेजमेंट वाले इवेंट्स भी होते हैं। टेक्निकल माने कि हमारे रोबोटिक्स हो गया, हमारा एरो मॉडलिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड हो गई। मैनेजमेंट माने बिजनेस हो गया, हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया। दोनों चीज़ का मिक्सचर है, और ये बच्चों का फेस्टिवल, इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर द ग्लोब आके पार्टिसिपेट करते हैं। आउट ऑफ इंडिया से भी आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। ओके, कहाँ से आए हैं इस बार? मतलब हमारा एक कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल कोडिंग मैराथन, वो ऑनलाइन इवेंट होता है। इसमें 20,000 प्लस ग्लोबल पार्टिसिपेशन होता है। ओके, हाँ। और क्या क्या इवेंट्स हैं? जैसे अब मैं इसको टेक्निक्स को तोड़ूँ तो टेक्निक्स एक तरह से मैं कंपटीशन में तोड़ दिया मैंने। हमारे यहाँ पे एग्जीबिशंस होते हैं, जैसे अभी यहाँ में रेलवे DRDO की तरफ से एग्जीबिशन है, यहाँ पे हम आर्मी की तरफ से उनका गन्स का एग्जीबिशन होता है। बाकी हम यहाँ पे रोबोट्स बुलाते हैं, जो कि मतलब एडवांस रोबोट चल रहे हैं हमारे जो वर्ल्ड में जो भी हैं। और इसके अलावा अगर मैं इसको एक और सेक्शन में दूँगा, हमारी टॉक्स होती हैं, थिंक टॉक्स बोलते हैं। जैसे इस बार हमारी टॉक्स में शंकर के पाल आ रहे हैं, जो कि ISI डायरेक्टर हैं। अभी HB श्रीवास्तव सर की टॉक हुई है जस्ट पहले, जो कि डायरेक्टर जनरल है DRDO। अभी हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट रिलेटेड बोलूँ मैं थोड़ा, इसको लोगों जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनको मतलब अच्छी पर्सनैलिटी, टेक्निकल गुरुजी गौरव, नाम सुना होगा सबने, वो भी हमारे यहाँ पे कल आने वाले हैं। तो ऐसी हम चीज़ें भी रखते हैं।
तो ये टेक्निक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आपको टेक्निकल चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, आपको लर्निंग्स भी मिलेंगी और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होगा। एंटरटेनमेंट में हमारी कॉमेडी नाइट भी होती है। हाँ, और साथ में कुछ मोटिवेशन भी होता है। ऑब्वियसली स्पीकर अगर कोई टॉक देने आ रहा है तो अपनी गाइडेंस तो देगा ही, अपना एक्सपीरियंस भी बताएगा और साथ में मोटिवेशन भी देगा। कुछ मोटो रखा हुआ है इस बार के टेक्निक्स का? हाँ, इस बार हमारा थीम जो है टेक्निक्स का गेटवे टू टेक्नोवर्स। हाँ, टेक्नोवर्स एक हमने नया वर्ड बनाया है। हाँ। टेक्नोवर्स, जैसे मेटावर्स होता है ना, राइट। मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी का वो है। हाँ हाँ, वैसे ही हमने टेक्नोवर्स एक वर्ड बनाया है जो कि एक टेक्निकल डायमेंशन ओपन करेगा। राइट। जो कि एक जितनी भी टेक्निकल फील्ड्स हैं वो बच्चों को एक गेटवे टू टेक्नोवर्स दे रहा है। गेट टू न्यू डायमेंशन इन विच टेक्निकल फील्ड्स आर देयर। ये हमारी इस बार की थीम है। ओके, और कुछ कहना चाहोगे कि जो लोग भी देखें? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा इवेंट है हमारे यहाँ पे, इतने सारे बच्चे आते हैं। अभी हमारे यहाँ पे 2000 प्लस पार्टिसिपेशन आए हैं और उसके अलावा जो बच्चे स्कूल के बच्चे हैं वो तो अलग हैं, बनारस के बच्चे अलग हैं, जो सिर्फ देखने आते हैं वो तो अलग ही हैं। मतलब यहाँ पे मैं बताऊँ तो 50,000 बच्चे आते हैं हमारे कैंपस के अंदर, जिसमें से 2-3 हज़ार बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट माने कि जो कि हमारे कॉम्पिटिशन जो है उसमें 15 लाख की हमारी प्राइज़ मनी रहती है, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के, बहुत कुछ बच्चे सीख के जाते हैं। हमें भी अच्छा लगता है एज ऑर्गेनाइजिंग टीम। बाकी चलो, नहीं मतलब सभी लोग इसको आएँ और इससे फ़ायदा लें। बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी।